मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाई स्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिले आरंभ हो जाइए शिक्षा वर्ष 2025-26 तेणु यही शिक्षा वर्ष रे आरंभ करबा आज नुआ वीडियो आम इंग्राजी रे थिबा प्रथम पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रु किछि एमसीक्यू डिस्कशन करबा सौरभ टेस्ट पेपर रु। हाँ पिले माने जो माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहु मात्रा रे तुम फ्रेंड्स मानक सहित शेयर कर दियो। तबे देरी करबानी आसो आज रो वीडियो स्टार्ट करबा। पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रिटन बाय, अर्थात ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम टी कहा द्वारा लिखा जाइछि ना एहार पोएट किए पिले ना सीएफ अलेक्जेंडर, सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वी डैश मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। पिले माने सब टॉपिक रो हमें लीड इन पढिबा, से लीड इन रे रहिछि वी सी एंड एंजॉय मेनी थिंग्स अराउंड अस such as beautiful sunrise, sunset, etc. So we dash many beautiful things around us. Now we see and enjoy. आमे देखु एवं उपभोग करू। So option A is the right answer. Question number 3, we smell the fragrances of the dash. Say lead in रे अछि पिले we smell the fragrances of flowers and feel the change of season. So the right answer हबो we smell the fragrances of flowers. Option B is the right answer. Question number 4, God has blessed us with the senses of dash. Say lead in अछि पिले who has blessed us with the senses of sight, smell and feeling. So एठार आंसर of sight, smell, feeling option D हेउछि right answer. Question number 5, we feel the change of seasons. So option D seasons is the right answer. Question number 6, according to the poet all things are bright and dash. पिले पोएम रो ना जहा एवं पोएम रो प्रथम लाइन अछि all things bright and beautiful. So the right answer is beautiful. Option B हेउछि right answer. Question number 7, the poet in all things bright and beautiful says each little flower that dash. पिले second stanza रो first line each little flowers that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. So each little flower that opens. So option A open is the right answer. Question number 8, which of the following combination is not appropriate? Play trees and flowers, this combination is appropriate. River, mountain appropriate. Birds, animals appropriate. किंतु लास्ट ऑप्शन देछि सनराइज एंड क्रिएचर्स, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट कौन ही था ना सनराइज एंड सनसेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल थिंग्स आर डैश एंड वंडरफुल। फर्स्ट स्टैंजा रो थर्ड लाइन पिले ऑल थिंग्स आर वाइज एंड वंडरफुल बुझिला तो। सो एठी आंसर हबो वाइज। ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। Question number 10, the poem in all things bright and beautiful says each little bird that dash, each little bird that sings. So option D is the right answer. Question number 11, which thing does the poet describe as purple headed? पिले ए पोएम रे केउ थिंग टी पर्पल हेडेड देखा जाए अर्थात ब्लूइश रेड देखा जाए ना द माउंटेन. So the answer mountain. Option C is the right answer. Question number 12, God has made the glowing colors of the dash. पिले भगवान काहाकू glowing colors देइसंती ना the flowers. So the right answer flowers. Option D is the right answer. Question number 13, the morning dash the sky, the morning brightens the sky. So option B brightens is the right answer. Question number 14, the river running by. What does the running mean here? Pile running ro artha kon na flowing. The river is flowing in the mountain. So the right answer of flowing. Option B heuchi right answer. Question number 15, in all things bright and beautiful the poet says the dash where we play. Pile mane amar poem ro achi
फिफ्थ स्टांजा रे अछि पिले द टॉल ट्रीज इन द ग्रीनवुड द मीडोज वेयर वी प्ले आमे पिले केउठारे खेलु ना मीडोज पिले मीडोज माने कोन ना आन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड सो हियर द आंसर इज द meadows where we play option B is the right answer. Question number 16. God has made dash God has made bright and beautiful things great and small creatures wise and wonderful things first answer सब रही तेणु एठारे God has made all the above so option D all the above is the right answer. Question number 17. The flowers and the birds in all things and beautiful are described as dash things ये जो फ्लावर्स एवं बर्ड्स को ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएम रे एगुडी को कोन माने लिटिल थिंग्स बेली वर्णना कराई बुझेला ना नहीं कोन देछि ना ईच लिटिल फ्लावर्स दैट ओपन ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स तेनु फ्लावर को लिटिल कह जाईछि बर्ड को मध्य लिटिल कह जाईछि तेनु एटा ऑप्शन बी लिटिल इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड ऑलमाइटी इज वेरी ग्रेट as he has made all things well so the right answer haba all things well so option C all things well is the right answer. Question number 19. What is the green wood full of pile green wood mane sabuja jangala keunthire paripurna na the tall trees bujhela the tall trees in the green wood so the right answer haba tall trees option A is the right answer. Question number 20. The little birds that sing have dash little bird को भगवान कौन देइछन ना टिनी विंग्स देइछन्ती each little bird that sings he made their tiny wings छोटो छोटो डेणा देइछन्ती so option B tiny wing is the right answer. Question number 21. What makes the mountain purple headed पिले माउंटेन किपरि पर्पल देखा जाए माउंटेन रो शीर्ष भाग किपरि पर्पल देखा जाए ना एठी आंसर हबो द सेटिंग सन सूर्यास्त समय रे माउंटेन पर्पल हेडेड देखा जाए सो ऑप्शन सी द सेटिंग सन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. सम ऑफ द रसेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग डैश सम ऑफ द रसेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग प्ले रसेस को कौन रूपे व्यवहार करा जाए ना मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स प्ले नोट्स एंड ग्लोसरी अछि रसेस कोन ना वेराइटीज ऑफ वाटर साइड प्लांट्स सम ऑफ व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स सो ऑप्शन सी मैट्स एंड बास्केट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ ऑल थिंग्स प्रत्येक जिनिस संपर्क रे कवि कोन चिंता करिसथि ना ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल all things wise and wonderful so option C both the above is the right answer bujhela option C is the right answer. Question number 24. Which are the two seasons mentioned in the poem all things bright and beautiful pile very important प्राय परीक्षा रे आसुची मने रखिबा ए पोएम रे दुईटी ऋतु विषय रे वर्णना कराई छै what are the two seasons ना two seasons are summer and winter बुझेला तो कवि सेठी कहिसंती कोन ना द प्लीजेंट समर सन एंड द कोल्ड विंड इन द विंटर सो द टू सीजन्स आर मेंशन्ड इन द पोएम आर समर एंड विंटर देखिबा केउ ऑप्शन रे समर एंड विंटर बा विंटर एंड समर अछि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द पोएट ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल मेंशन टू डिस्क्राइब गॉड पिले भगवान संपर्क रे एठारे केउ वर्ड को पोएट व्यवहार करिसंती ए पिले लास्ट स्टांजा को जाओ हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल तेनु एठारे भगवान को उद्देश्य रे से केउ वर्ड व्यवहार करिसंती ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द डैश इन द गार्डन इज राइप पिले भगवान गार्डन रे कोन देइछंती ना राइप फ्रूट्स सो एठारे आंसर हबो फ्रूट ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स डैश ऑफ द रसेस आर यूज्ड एबे आलोचना करथिली सम ऑफ द रसेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स सो द राइट आंसर हबो सम सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. व्हिच इज प्लीजेंट पिले पोएम रे काहा को प्लीजेंट बेली कहिसंती ना द प्लीजेंट समर सन
बुझेला सो द राइट आंसर हम समर्सन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 he gave us eyes to see them here them refers to dash he gave us और he एठी गॉड हमको भगवान हमको आखि देइछंती टू सी देम कोन देखिया को देइछंती ना एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स सब सुंदर जिनिस जहाँ से सृष्टि करिछंती फ्लावर हो बार्ड हो माउंटेन हो रिवर हो ट्री हो मिडो हो से सब सुंदर जिनिस को देखिबा पाई भगवान आमको आखि देइछंती तेणु एठारे देम काहा को रेफर करूची ना ऑल द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय द गॉड सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 हु हैज गिवन अस आईज एंड लिप्स किए आमको आईज एंड लिप्स देइछंती आउ केही नो ऑलमाइटी गॉड सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 द मिडोस लुक डैश पहले मिडो किपरि देखा जाए ना मिडोस लुक्स ग्रीन सो ऑप्शन सी ग्रीन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 व्हेन डज द कोल्ड विंड ब्लो पहले ठंडा पवन केते बेले प्रवाहित हुए ना इन द विंटर सीजन सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर an open area of grassland is called dash एबे कहितली नोट्स एंड ग्रोसरी रे अछि पिले an open area of grassland is called meadows so option A meadows is the right answer question number 34 according to the poet C.F. Alexander all things have been made by God so option C God is the right answer question number 35 the poet says all things are bright and beautiful similarly all things are wise and wonderful so option B wise and wonderful is the right answer question number 36 what has God given to the little bird पहले भगवान लिटिल बर्ड कौन देइछंती ना टिनी विंग्स देइछंती so option A टिनी विंग्स is the right answer question number 37 the flowers are beautiful because of their dash पहले फ्लावर ब्यूटीफुल देखा जाए कोथि पाइन देखा जाए ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर ग्लोइंग कलर सो ऑप्शन डी ग्लोइंग कलर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 फ्लावर इज टू ओपन एज बर्ड्स इज टू सिंग सो ऑप्शन बी सिंग इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 द माउंटेन इन द पोएम ऑल थिंग्स are beautiful bright and beautiful described as mountain पिला किपरि देखा जाय ना पर्पल हेडेड so option C purple headed is the right answer question number 40 in the expression purple headed means कोन पिले हमर नोट्स एंड ग्लोसरी अछि मन रखिया purple headed means bluish red so the right answer is bluish red option B is the right answer